and welcome. I am Yarujali. In this lab session, we will learn about ORF. By the end of this lecture, you will have a comprehensive understanding of the concept of open reading frame. You will know how to apply knowledge and skills to efficiently identify the 6 translational reading frames in a given DNA or RNA sequence and apply knowledge of ORF identification in different fields. To begin, let's clarify what an ORF is. ORF stands for Open Reading Frame. It refers to a portion of DNA or RNA sequence that has the potential to encode a protein. In simpler terms, it encompasses the region between the start codon and the stop codon in a nucleotide sequence. An open reading frame is the length of DNA or RNA through which the ribosomes can move and add amino acids one after another until it reaches a codon that does not code for any amino acid, like these stop codons. As shown in the diagram, the translation starts from start codon, typically AUG codes for methionine, and continues until the stop codon is reached. So, to identify open reading frame, we first find the start codons, which are typically ATG or AUG. Then we look for stop codons in the form of triplet codons. This process requires finding the 6 frames of translation. We know that there are 6 reading frames, 3 in positive strand 5' to 3', and 3 in the negative strand 3' to 5'. The basic procedure is to divide the DNA strand into triplet codons for the first reading frame. For the second reading frame, we would start with the second nucleotide, and for the third frame, we start from the third nucleotide, dividing them into triplet codons. Similarly, we would do this for negative strand, but before that, we have to convert 5' to 3' into 3' to 5' strand by writing its complementary sequence. So, let's clarify all this scenario with an example. You can see that this is a DNA sequence which is 5' to 3'. अब हम इसे simply 3 codons में split कर देंगे. Like triple T would be 1 codon, ATG would be 1, triple C would another one. So आप simply देख सकते हैं कि हमने इस पूरे DNA सीक्वेंस को 3 में डिवाइड कर दिया है. उसके बाद सेकेंड फ्रेम के लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को छोड़ देंगे as shown here, और उसके बाद हम सेकेंड न्यूक्लियोटाइड से स्टार्ट करेंगे और उसको 3 में स्प्लिट करना शुरू कर देंगे और इसे हम कहेंगे सेकेंड फ्रेम. और थर्ड फ्रेम के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले 2 न्यूक्लियोटाइड्स डबल T उसको छोड़ देंगे और थर्ड न्यूक्लियोटाइड से हम उसको 3 में डिवाइड करना शुरू कर देंगे और उसे हम कहेंगे थर्ड फ्रेम. And now we have to convert 5' to 3' strand into 3' to 5' strand.
इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल ही डीएनए जो सीक्वेंस था इसके आगे हम एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लिखेंगे, लाइक टी के अगेंस्ट ए, फिर टी के अगेंस्ट ए, इसी तरह जी के अगेंस्ट सी आएगा और सी के अगेंस्ट जी आएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ए के अगेंस्ट टी आता है और जी के अगेंस्ट सी आता है, जबकि आरएनए में टी जो है वो यू से रिप्लेस हो जाता है। जब हमारा ये कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस आ जाएगा हम इसको रिवर्स कर देंगे। सिंपली जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है वो हमारा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा और जो हमारा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है वो हमारा लास्ट न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा और उसे हम कहेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड। सो इसके ऊपर भी हम सिंपली वही चीज रिपीट करेंगे। हम इस डीएनए स्ट्रैंड को अगेन 3 स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट करेंगे और फिफ्थ फ्रेम के लिए, और यू कैन से सेकेंड फ्रेम ऑफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम और नेगेटिव स्ट्रैंड हम फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को छोड़ देंगे और अगेन उसको 3 में डिवाइड करेंगे। एंड फॉर द लास्ट फ्रेम हम पहले 2 न्यूक्लियोटाइड्स को छोड़ देंगे और थर्ड वाले से हम अपनी दोबारा 3 में उसको स्प्लिट करना शुरू कर देंगे। Now as we know that sets of 3 nucleotides make a codon and each codon codes for a specific amino acid. Here you can see like triple U, WC coding for phenylalanine, CUC, CUA and CUG codes for leucine, and AUG which is typically known as the start codon is codes for methionine. But however, in some bacteria and yeast, other start codons like GUG, CUG and WG are also code for the start codon. And here you can see UAA, UAG and UGA refers as a stop codon. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम का एक मैसेंजर आरएनए है और यहाँ पे जो है ट्रांसलेशन वो AUG मेथियोनिन से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद जैसे ही हमारा स्टॉप कोडोन UAA आ जाता है, जो हमारी ट्रांसलेशन है वो स्टॉप हो जाती है और हमारा जो पॉलीपेप्टाइड है वो यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। नाउ अब हमने पीछे देखा कि हमारा हर कोडोन जो है वो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है। तो हमने जो फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम और थर्ड फ्रेम बनाया था, हम देख सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को आगे कोड कर रहा है। जैसे कि ATG जो है वो मेथियोनिन को कर रहा है, CCC प्रोलीन को कर रहा है। इसी तरह ये पूरी की जो पूरी न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है ये हमारा आगे किसी अमाइनो एसिड सीक्वेंस में कन्वर्ट हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है। तो हमने यहाँ पे टर्कोइज कलर से आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट फ्रेम में ओपन रीडिंग फ्रेम है, because it starts from ATG and stops at TAA, which is also a stop codon. सेकेंड फ्रेम में हम देखते हैं कि यहाँ पे ATG जो है वो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से TAG पे स्टॉप हो रहा है। और थर्ड वन में हमें पता चल रहा है कि कोई भी हमारा ORF इसमें प्रेजेंट नहीं है। Now we can see that this diagram clearly demonstrates that the presence of stop codon or start codon alone cannot determine the existence of an ORF. The cross shows that there is no ORF present in the third frame. Simply, हमने 3 प्राइम से 5 प्राइम में भी यही देखा कि जो हमारे कोडोन्स हैं वो आगे जाकर एक पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो रहे हैं। हर कोडोन किसी अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है और खाली स्टॉप कोडोन या स्टार्ट कोडोन मौजूद होने से हम ORF को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते until unless हमारे पास एक स्टार्ट कोडोन हो जो कि एंड हो रहा हो स्टॉप कोडोन पे, जैसे कि आप 5th फ्रेम में देख सकते हैं। सो
In this 3' to 5', we can simply see that there is no ORF present in 4th frame and 6th frame. इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि 5' to 3' में जोन से ORF प्रेजेंट हैं, जिस पोजीशन पे प्रेजेंट हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो उसी पोजीशन पे रिवर्स स्टैंड में भी मौजूद हो. So now, here are some applications of ORF, such as you can identify potential ORF genes and understand their evolutionary relationships. You can apply functional annotation techniques to predict the functions and characteristics of ORF genes, aiding in their identification and understanding. You can also utilize ORF gene prediction to identify potential drug targets for therapeutic intervention and drug development. You can also employ comparative proteomics to analyze the protein expression patterns of ORF genes, enabling insights into their functions and interactions. You can also utilize ORF gene prediction in evolutionary studies to investigate different phylogeny of different species. Thank you. This concludes the complete ORF overview. Thank you for your attention.